ठीक है, जैसे इसके केस में हमने अभी जो ये परफॉर्म किया था यहाँ पे एक्टिविटी, यहाँ पे भी वी हैव दीज टू बॉब्स ऑफ नियरली इक्वल masses, right? So we have the center at center of mass at nearly at the center. You can see ये जो लेंथ है ये nearly equal है, ठीक है ना? क्योंकि अगर ये हैवी होता तो हमें थोड़ा सा इसको इधर की साइड मूव करना पड़ता। अगर ये वाला बॉब हैवी होता, इसमें इस एक्टिविटी में अगर ये वाला बॉब हैवी होता तो हमें इसको इधर की साइड मूव करना है ना। उसका x1 x2 चेंज करते हम, नो, की प्रोडक्ट करके वो हमारा सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स अकॉर्डिंगली आते हैं फिर। तो इफ वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेम मास देन m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, वी कैन राइट लाइक दिस। आपके जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे सेंटर ऑफ मास के वो आएंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2, ठीक है, is equal to m2 is equal to m, both the masses are equal, both the particles are of same mass, then we can write m1 x1 plus m2 x2 upon m1 plus m2, right? We can write m for both, so m common आ गया, ब्रैकेट में आएगा x1 plus x2, in the denominator we have 2m, m cancel and you'll get this one, ठीक है? And for n particles we have the same formula, ठीक है, but here we have n number of terms, ठीक है? अब समेशन में कैसे लिखते हैं, बिकॉज यहाँ पे आपकी साइकिल चलती है फ्रॉम i is equal to 1 to n, so we'll put i is equal to 1, so this becomes m1 x1, then summation for plus, summation indicates plus sign, I is equal to 2, increase the value of I, m2 x2 again plus, m3 x3 again plus, m4 x4 again plus till n, और n के बाद when it becomes n plus 1 we'll stop it, stop the cycle, काउंटर को बंद कर देंगे, ठीक है? सिमिलरली यहाँ पे काउंटर चलेगा आपका n तक, I is equal to 1 to n mi, and summation over I is equal to 1 to n mi is sum of masses of all the particles that we have in a system. So we can write this as total mass, capital M, total mass of the system. So this is how we can write. Similarly, if we have, instead of this x-axis, we are considering x-axis only, and if we have system of particles, n number of particles in a plane, then we can also find y coordinate, and y coordinate is I mi yi divided by m. In the same manner we'll write for y coordinate. Clear? Now we have different cases. Case 1, if the origin is shifted to m1 then x1 is 0. ये मैंने बताया था आपको. We can place our origin anywhere as per our convenience. If we place our origin, if we consider a reference frame on mass m1, right, then x1 becomes 0 and distance between x1 and x2 is d, and x2 becomes d, no, because distance between m1 and m2 is d, है ना? m1 m2 के बीच में जो distance है वो क्या है? d. So m1 is at origin, m1 is at origin, x1 is 0 and x2 is d. Okay, so xcm is m2d upon m1 plus m2. Please write this. Done. So we have moved our origin from this point to this point where m1 is. Then x1 becomes 0 and x2 becomes t. Case 2. This time we have shifted our origin to m2. So if we shift our origin to m2, then x2 becomes 0 and m1 lies on the negative side of x-axis. Look at this.
Now we have moved our origin to M2. When we move our origin to M2, you can see M1 is along negative x-axis, no? Negative x-axis. So x1 is minus d, not d this time, it is minus d. So minus M1d plus M2 into 0 upon M1 plus M2. The center of mass, coordinates of center of mass is M1d upon M1 plus M2. Because we are taking minus XCM, because XCM, center of mass, is also along the, it is on the negative side of x-axis, and M1 is also on the negative side of x-axis. Both are negative. Minus minus cancel each other, and we are left with this. So we simply, take the mass M1 or M2, here M2, the particle which is not at origin. So here M2 is not at origin, and in this case M1 is not at origin, and we take that mass in the numerator. We multiply the distance between the particles and divide it by total mass. Okay. Write both the cases. Next we have case 3. Now this time origin is shifted to XCM. देखो पहले हमने कहाँ shift किया? M1 पे. Then we have shifted origin to M2. Now we are moving this origin to center of mass. So XCM is 0 and X1 is minus D1. D1 is the distance between XCM and X. D2 is the distance between XCM and M2. D1 डिस्टेंस है XCM और M1 में, D2 डिस्टेंस है XCM और M2 में. ठीक बोल रही हूँ ना? शायद सब थक गए हैं इसका मतलब. ठीक है, तो minus M1 D1 plus M2 D2 upon M1 plus M2. D1 is on the negative side of x-axis and D2 is on the positive side of x-axis. That's why we've written negative for M1 D1. ठीक है, so M1 D1 is equal to M2 D2 because center of mass is at the origin. So we have written 0 here. So minus M1 D1 plus M2 D2 upon M1 plus M2. Or we can write, because ये आपका 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर ना, जब ये अलग जाएगा वहां पे 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा. तो minus M1 D1 plus M2 D2 is equal to 0. तो सिंप्लीफाई करोगे M1 D1 is equal to M2 D2 आएगा. और we can write M2 by M1 is equal to D1 by D2. So if our center of mass is at the origin, then these ratios are equal. ठीक है, तो M2 by M1 इनवर्स रिलेशन है ना, इनवर्स रिलेशन है ना. M2 by M1, M1 का डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से D1 है और M2 का डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से D2 है. तो जहां पे M2 है उसके सामने D1 है और जहां पे M1 है उसके सामने D2 है. इनवर्स रिलेशन है, ये ध्यान रखना है. M1 by M2 is equal to D2 by D1 or M2 by M1 is equal to D1 by D2. We have this inverse relation. The ratios of the distance of the center of mass from the particles is equal to inverse ratio of their masses. This indicates that center of mass is closer to the heavier mass. अभी बताया था ना, अगर ये heavy कर देंगे तो थोड़ा सा इसको इधर मूव करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए. एक साइड अगर हैवी होती है, दूसरी साइड अगर लाइट होती है, तो बैलेंस करने के लिए आप हैवी वाली साइड से पकड़ोगे तभी वो बैलेंस होगा. राइट, किसको हम इक्वेट कर रहे हैं यहाँ पे? मूवमेंट ऑफ फोर्स. अगर सपोज यहां से बैलेंस कर रहे हैं तो ये मास डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए. ठीक है, डन. Center of mass. Center of mass of a system depends on the masses of the particles, right? है ना, पार्टिकल्स के मासेस पे डिपेंड करता है सेंटर ऑफ मास. जोर से मारो बेटा सिर और अच्छी तरह समझ आएगा.
The center of mass of the system depends on the masses of the particles, on the position of the particles relative to one another. है ना, particles की position पे depend करता है, particles की masses पे depend करता है, and center of mass does not depend on the reference frame used to locate it. ठीक है, does not depend on the reference frame used to locate it. Reference frame पे depend नहीं करता. We can choose any reference frame. As per our convenience, we can choose any reference frame. We can take reference frame on a first object, a particle, we can take reference frame on second particle or nth particle or center of mass. कहीं पे भी हम reference frame choose कर सकते हैं as per our convenience. ठीक है? Coordinates of center of mass of a system of particles in a plane. Two particles of masses m1 and m2 are located at points x1, y1 and x2, y2 in the xy plane. तो अब हम plane की बात कर रहे हैं. Initial अभी earlier we had done for x-axis only. Now we are considering particles in the plane. When particles are in the plane, then we locate. How do we locate the position? We take both the coordinates x and y, right? xy plane में है तो x and y coordinates लेंगे. ठीक है? तो m1 is at x1, y1, m2 is at x2, y2, and center of mass, location of center of mass is xcm, ycm. Then we can write xcm as this, m1 x1 plus m2 x2 upon m1 plus m2, and ycm as m1 y1 plus m2 y2 upon m1 plus m2. This is how we can write. And if we have particles located in space, space means three-dimensional. We have three dimensions now, x, y, z. Then we can write xcm as this, ycm and zcm as this. Okay? Easy. That's all for today. Center of mass is the point where the whole mass of the object is supposed to be concentrated. And we can also find coordinates of center of mass. We can find x, y, and z coordinate, and these are the formulas. This is how we find for two particle system. And if we have n number of particles, then summation over I is equal to 1 to n mi upon m, total mass in the denominator, which is sum of all the masses of the particles that we have. We have n number of particles, we'll take the masses of n particles and we'll add it in the denominator. This is how we do. Yes, this we had done in the previous class. Now we have questions based on this. First question. Two bodies of masses 1 kg and 2 kg are located at 1, 2 and -1, 3 respectively. Calculate the coordinates of the center of masses m1 and m2. And they are separated by some distance, right? So mass m1 is 1 kg, m2 is 2 kg. Coordinates of first body is 1, 2. Coordinates of second is -1, 3. So we have to find the coordinates of center of mass. Let center of mass lies somewhere here. वैसे तो when we locate the position of center of mass, then it is closer to the massive object, because we have 1 kg and 2 kg, so it is closer to this. It has to be closer to m2 because m2 is heavier, right? So it should lie somewhere here. Let the coordinates of center of mass be xcm, ycm, or you can simply write x, y. It's your choice that how are you writing. xcm is m1 x1 up plus m2 x2 upon m1 plus m2. Put the values. m1 is 1, x1 is 1, m2 is 2, x2 is -1, m1 plus m2 is 1 plus 2. So it's 1 minus 2 by 3. Answer is -1 by 3. Similarly, we can find y coordinate for center of mass. Ycm is m1 y1 plus m2 y2 upon m1 plus m2. You're done. m1 is 1, coordinate 2, y, this is y1, this is y1, this is x1, and similarly this is x2 and y2. m2 is 2, y2 is 3 upon 1 plus 2. On solving this, we'll get 2 plus 6 upon 3, 8 by 3. The coordinates of center of mass, at the end we'll write coordinates of center of mass.
-1/3, 8/3. Distance between the centers of carbon and oxygen atoms in the carbon monoxide gas molecule is 1.13 angstrom. Locate the center of mass of the gas molecule relative to the carbon atom. Write the question first. And distance between these two atoms, carbon and oxygen of carbon monoxide. Carbon monoxide is CO, right? The distance between these two atoms is given, it is 1.13 angstrom. Locate the center of mass of the gas molecule relative to carbon atom. Means we have to find the location of center of mass from carbon atom. Okay, relative to carbon atom. See, it's our choice at how we take a coordinate system. We can take x1, y1, x2, y2 as a coordinate of C and O, right? And for the sake of convenience, we can also take this carbon on, at origin. We can take this carbon at origin. So what if we take this carbon at origin? If we take this carbon at origin, then coordinates of this point would be 0, 0, right? So x1, y1 is 0, 0. And x2, y2, we are assuming this CO molecule on x-axis. देखो हमने ना क्या करना है, वेरिएबल्स लिमिटेड रखने हैं, ज्यादा वेरिएबल्स नहीं होने चाहिए, बिकॉज वो कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करेंगे. आपको उतने वेरिएबल्स की वैल्यूज पता होनी चाहिए, राइट? और फाइंड करनी पड़ती है ना? तो ट्राई करो कि मिनिमम वेरिएबल्स के साथ डील करना पड़े. उसके लिए वो रेफरेंस फ्रेम चूज करो जो आप जिसमें कंफर्टेबल हो. तो अगर हम ये अज्यूम करते हैं कि बोथ सी एंड ओ दे आर लाइंग ऑन एक्स एक्सिस, तो इजी हो जाएगा हमारे लिए, बिकॉज वाई कोऑर्डिनेट हमारा 0 हो जाएगा और एक्स से डील करना पड़ेगा, जिसमें से हम एक को ओरिजिन पे मान रहे हैं. तो x एक का x भी 0 हो जाएगा. तो दूसरे वाला x जो है हमें पता है, बिकॉज डिस्टेंस इज 1.13 एंगस्ट्रॉम. सो इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रॉम वी कैन राइट इट्स 1.13 and 0 for origin, for oxygen. And center of mass यहाँ कहीं होगा, है ना? And we can write the coordinates of center of mass as xcm, ycm. Again, see xcm, but what about ycm? Ycm is 0. Why is 0? Because it is on all the atoms. They are C and O, they are on x-axis. Both the atoms are on x-axis, so center of mass will also lie on x-axis. Now things have become easier for us. Now we can easily deal with this, right? We have to find only xcm, no need to find ycm. Xcm is, now for this we need to know the mass. We need to find the mass of carbon and oxygen first. बताओ m1 क्या होगा in terms of in grams? How do we write C? It's C612. We can take 12. So m1 is 12 gram atomic mass, and m2 is, oxygen is OH16, right? So m2 is 16 grams. Now put the values. So m1 x1 plus m2 x2 upon m1 plus m2. Okay, m1 is 12, x1 is 0, m2 is 16, x2 is 1.13 in angstrom. Okay, divided by distance is in angstrom, right, between the atoms. So coordinates we have written it as 1.13, not 1.13 10 to the power -10. Coordinate इतना क्या फर्क पड़ता है? It's just a number. So m1 plus m2, 12 plus 16. So 16 into 1.13 is, बताओ, 18.08. And नीचे 18.08 and नीचे is we're getting 28. So answer 0.6457 angstrom. 0.6457 angstrom is the answer. So the coordinates of this center of masses, coordinates क्या होंगे center of mass के?
0.6457, 0. And it lies at a distance of 0.6457 angstrom from this atom, carbon atom. And coordinates of center of mass of the system in vector form. See, if a system consists of two particles of masses m1 and m2, and position vectors are given, vector r1 and vector r2 with respect to origin, O, then position vector of center of mass is given as RCM. See, we are considering these two particles, m1 and m2. Position vector of m1, मतलब उसका जो reference frame that we are taking, distance of that mass from the reference frame is vector r1, and distance of this mass m2 from reference frame is vector r2. And we are assuming center of mass that lies on the axis joining the two masses. It lies somewhere here, and position vector of the center of mass is RCM. CM for center of mass we are writing. So in terms of in vector form, we can write like this. As we write m1 x1 plus m2 x2, or m1 y1 plus m2 y2, or m1 z1 plus m2 z2, in the same way we can write for in terms of position vector. Okay, so it is m1 r1 vector plus m2 r2 vector upon m1 plus m2. Okay, so vector form we can write like this. Please write this. What is vector r1? If we assume that the coordinates of mass m1, coordinates क्या है उसके x1 y1 है, और that of m2 x2 y2 है, तो position coordinates को हम कैसे लिखते हैं, xi plus yj. तो r1 को क्या करोगे, x1 i cap plus y1 j cap. Similarly, we can write for r2 x2 i cap plus y2 j cap, because m1 के coordinates हम क्या लेते हैं, x1 y1, और m2 के coordinates we take x2 y2. ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में if we are taking position vectors as this, so we can write position vectors in terms of coordinates, है ना, ये तो आता है ना. So RCM, coordinates of RCM, we take XCM, YCM, so we can write RCM as this, XCM I cap plus YCM J cap. Write this. If we have n particles, similarly, if we have n particles, then we can write in a similar manner. But this time we have n number of terms, right, in the numerator, and we'll add all the masses in the denominator. Summation की terms में भी लिख सकते हो इसको, I is equal to 1 to n mi divided by total mass capital M, and this total mass is m1 plus m2 to mn, sum of all the masses of n particles that we have considered in the system. Okay. Coordinates of center of mass of a rigid body. A rigid body is one which is of definite shape and definite size, right? And all the particles are closely packed. It has continuous mass distribution. We are assuming n number of particles of masses delta m1, delta m2, delta mn, with the masses of very small particles in the body with coordinates this. So we are considering space. Space means we will consider all the three coordinates, x, y, and z. So for mass m1, coordinates of this mass is x1, y1, z1. For m2, it is x2, y2, z2, and for mn, it's x and y and zn, okay, respectively. So let the coordinates of center of mass of the rigid body be this, as we always take, right, xcm, ycm, zcm. So we can take this. So we can write xcm as this. अब ये क्या चीज है, ये क्या हमने लिखा है, ये हमें क्लियर नहीं हो रहा, आ रहा है या नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, तो इसको अंडरस्टैंड करना है हमने. देखो, लेट्स सी, होता क्या है कि एक होता है कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन और एक होता है डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन में ये होता है कि सपोज आपके पास वी हैव अ सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स और उनको हम लोकेट किया हुआ है, मतलब दे हैव अ स्पेसिफिक डिस्टेंस. तो यू कैन लोकेट ना, जैसे अगर आपने यहाँ पे ये सेंटर ऑफ मास है, तो यू कैन write the coordinates as x1, y1, z1 for this mass. So we can locate separately all the masses. So this is called a discrete mass distribution.
So in discrete mass distribution, we consider individual particles, their masses and their coordinates. And then we write like this. For XCM, we write 1 by M summation over I, Mi, Xi. This is what we had done in the previous slide, right? For YCM, it is 1 by M summation over I, Mi, Yi. So we write like this for discrete mass distribution. डिस्क्रीट मास में हम अलग अलग पार्टिकल्स के मासेस को पकड़ते हैं. ये पार्टिकल एक फर्स्ट पार्टिकल है, इसका मास m1 है, इसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं. ये सेकंड पार्टिकल है, इसका मास m2 है, इसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं. ठीक है, दिस इज हाउ वी डू. कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं? कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन में हम एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करते हैं ऑफ मास dm. We consider a small element of mass dm and we assume, जैसे इसके लिए let's draw a separate figure for this. Small element of mass dm. अब ये जो small element है ना dm, इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट जो बहुत सारे छोटे छोटे डीएम होंगे ना हमारे पास, है ना, ऐसे ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे डीएम होंगे और उन सारे डीएम को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल मास आएगा. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हम एक छोटा सा एलिमेंट ले रहे हैं, उसके बेसिस पे उसको इंटीग्रेट करके वी आर फाइंडिंग सेंटर ऑफ मास, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास. ये कब करते हैं? जब कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है. ठीक है, जब कॉन्टिन्यूअस मास, जैसे एक्सीएम निकाल रहे हो आप, तो एक्सीएम वी कैन राइट एक्सीएम इज xdm डिवाइडेड बाय इंटीग्रल dm. ठीक है, इंटीग्रल dm इज m, total mass. So when we add all these small dm, when we integrate all the dms that we have in our system, then we get total mass. ठीक है, so in the denominator we can write like this. So we have written this m for this integral dm and ऊपर में क्या आएगा? xdm का इंटीग्रेशन. जैसे m1 x1 था ना, तो m को हमने रिप्लेस कर दिया dm से, and x is the coordinate, x coordinate, and this is the y coordinate of dm, this is the c coordinate of dm. Okay, clear? So general in vector form we write like this: RCM is equal to 1 by m integral vector r dm. Clear? Easy. Velocity of center of mass. So we'll again consider the same system of n particles of masses m1, m2, mn, and their position vectors is this respectively. At any instant of time we can we can take the derivative of r. So when we take the derivative of r with respect to time, we get velocity. dr by dt is v na, hai na? So how do we write RCM? Let's write this first. Position vector of center of mass is written like this. For discrete mass distribution we write like this, and this is total mass of the system m1 plus m2 to mn. So as the time changes, because particles also move, so position vectors will change. Okay, so hence because position vectors are changing and therefore center of mass, position vector of center of mass will also change. अगर r1 r2 r3 rn चेंज होंगे तो rcm भी क्या होगा? चेंज होगा. ठीक है, the velocity of center of mass of the system can be written as this: vcm is equal to drcm by dt. ठीक है, drcm by dt, dr by dt is v ना. जब पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करते हो टाइम के रिस्पेक्ट में तब वेलोसिटी आती है. ये आपने सेकंड चैप्टर में ही कर लिया था, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, राइट? Now VCM, see, because VCM is, look at this, it's drcm by dt. So in place of RCM, we are going to write this formula, the same formula, m1 r1 vector plus m2 r2 vector. ठीक है, इसको हम लिखेंगे और फिर अलग अलग हम सेपरेट करेंगे, मतलब r1 r2 को इंडिविजुअली हम डिफरेंशिएट करेंगे. ठीक है, तो VCM क्या है? ये हो जाएगा. नहीं आया या आ गया? नहीं आया? यहाँ देखो पीछे, RCM में आपने ये पुट कर दिया. ठीक है, ये एक इसको पुट करोगे जब RCM में और फिर डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आप m को तो डिफरेंशिएट नहीं करोगे ना टाइम के रिस्पेक्ट में, मास थोड़ा चेंज हो रहा है. चेंज क्या हो रहा है? पोजीशन वेक्टर. तो जो ये d by dt है ये सिर्फ r के पास जाएगा, m के पास we do not differentiate mass, right? We only differentiate position vector with that, position vector, क्योंकि वही चेंज हो रहा है, मास थोड़ा चेंज हो रहा है.
ठीक है, तो ये आपका m1 dr1/dt ऐसे हो जाएगा. Now this dr1/dt is position vector of r1 is position vector of m1. तो dr1/dt क्या हो जाएगा? Velocity of first particle. r2 is position vector of m2. dr2/dt क्या हो जाएगा? Velocity of second particle. rn is position vector of nth particle. drn/dt क्या हो जाएगा? Velocity of nth particle. So these are the velocities. v1, v2, v3 are the velocities of individual particles that we have. So we can write like this. ठीक है? और this. इसमें क्या समझ में आया? देखो आपका जो वेक्टर RCM है, वी कैन राइट वेक्टर RCM एज m1 r1 वेक्टर. आपको नहीं आया था अपनी? और किसको नहीं आया ये? ऑनेस्टी से बताओ, बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? आपको नहीं आया, आपको आ गया? नहीं आया? आ गया. m1 r1 वेक्टर, आपको m2 r2 वेक्टर, और यहाँ पे आपका mn rn वेक्टर है, राइट? In the denominator we have all masses, sum of all the masses we take. This is how we write for position vector of center of mass. ठीक है, अब हमने क्या करना है? We are going to find velocity now of center of mass. ठीक है, so for this we need to differentiate this with respect to time, only then we get the velocity of center of mass. Now on differentiating right hand side and left hand side, on differentiating both the sides with respect to time, we get so dr cm vector by dt. ठीक है, ये आ जाएगा. अब ये जो है we can write this term collectively as capital M. It belongs to, you know, and it is in the denominator, it belongs to all. So we can take it outside, we can write it outside. ठीक है, now look at this, because we are differentiating both the sides, right? So let's consider the first term. We cannot differentiate m1 because it is a constant. So we can only differentiate position vector, because position vector is changing with time. Now object is moving, particle is moving, so it's only its position is changing, not mass. ठीक है, तो हम m को स्मॉल m1 को तो डिफरेंशिएट नहीं करेंगे. We will differentiate this dr1/dt. और इसको तो हमने ऑलरेडी बाहर लिख ही लिया है ना, तो अब हमें सिर्फ जो ब्रैकेट के अंदर जो न्यूमरेटर वाले टर्म्स हैं उन्हीं से ही डील करना है. m1 तो डिफरेंशिएट नहीं होगा तो r1 होगा. सिमिलरली m2 डिफरेंशिएट नहीं होगा बट r2 होगा. ओके, नाउ इट्स क्लियर. ऐसे ही mn डिफरेंशिएट नहीं होगा, rn होगा, बिकॉज पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहा है, मास चेंज नहीं हो रहा है. अब 1/m, दिस इज BCM बिकॉज ये पोजीशन वेक्टर था सेंटर ऑफ मास का, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वी विल राइट. And here m1, this is the position vector of first particle that we have, right? Particle 1, particle 2, we have n particles, no? So first particle, so dr1/dt is the velocity of first particle, m2 velocity of second particle, velocity of nth particle, or we can write in terms of this summation form mein. Discrete. So two particles of masses 100 gram and 300 gram at a given time have the positions this and this meter. 2 I cap plus 5 j cap plus 13 k cap meter, and minus 6 I cap plus 4 j cap minus 2 cap meter respectively. And velocities are also given: 10 I cap minus 7 j cap minus 3 k cap, and 7 I cap minus 9 j cap plus 6 k cap meter per second respectively. We have to find instantaneous position and velocity of center of mass. So m1 is 100 gram, m2 is 300 gram, vector r1 is given, vector r1 is 2 I cap plus 5 j cap plus 13 k cap, vector r2 is given, it is minus 6 I cap plus 4 j cap minus 2 k cap. Position vectors, they are meter, and velocities are given. Velocity of first particle in vector form, it is 10 I cap minus 7 j cap minus 3 k cap meter per second, and velocity of second particle is
7 I cap minus 9 J cap plus 6 K cap meter per second. We have to find instantaneous position at a point of time. Okay, and velocity of center of mass. M1 is 100. Right, R1 plus M2. Right, R2 now. Divided by 100 plus 300. Have you done? क्या आ रहा है? 200 I cap plus 500 J cap plus 1300 K cap minus 900 I cap plus 1200 J cap minus, sorry, okay, yes, हाँ 18 आएगा यहाँ पे, 6 3 18 होता है. 100 कॉमन भी ले सकते थे. 1800 and 600 K cap divided by 400. What will you get? Minus 1600 I cap plus 1700 J cap minus 700 K cap. Yes, plus, because 13 is greater, divided by 400. So we can write minus 16 I cap plus 17 J cap plus 7 K cap divided by 4. ठीक है, RCM आ गया. अब VCM निकालो. VCM is M1 VCM vector, right? M1 V1 vector plus M2 V2 vector divided by M1 plus M2. M1 is 100, V1 is 10 I cap minus 7 J cap minus 3 K cap plus 300, 7 I cap minus 9 J cap plus 6 K cap divided by M1 plus M2. 100 plus 300. We can 100 इस बार कॉमन ले लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आएगा नीचे 400, ये 100 into 400 और ब्रैकेट में 100 कॉमन ले लिया तो 10 I cap minus 7 J cap minus 3 K cap plus 3 into 7 21, 3 into 9 27, 3 into 6 18. One by 4. Answer is 31 I cap minus 34 J cap plus 15 K cap by 4. Momentum of center of mass. What is momentum? It is the quantity of motion contained in the object. And mathematically, how do we write momentum? Mass into velocity, right? So velocity, we have already found out. Now we just have to multiply that velocity with mass to get momentum. No? The velocity of center of mass of the system containing n particles is given by this. ये हमने ऑलरेडी कर लिया कि वेलोसिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं. तो अगर हम वेलोसिटी में मास को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? मोमेंटम. So multiply mass on both the sides. See, when here we'll multiply total mass, because we assume that center of mass is the point where the whole mass of the object is concentrated, right? तो अगर उसका सारा मास उसी पॉइंट पे ही है तो वहां पे आप टोटल मास को ही मल्टीप्लाई करोगे,
है ना। तो m इंटू VCM हो गया, और यहाँ पे जब लेफ्ट हैंड साइड में आप मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी राइट हैंड साइड में जब मल्टीप्लाई करोगे तो m आपका कैंसिल हो जाएगा और आपके पास ये आ जाएगा m1v1 वेक्टर प्लस m2v2 वेक्टर टू mn_vn वेक्टर। ओके, नाउ mvcm इज momentum of center of mass, PCM, P is momentum, and m1v1 is the momentum of first particle, m2v2 is the momentum of second particle, mn_vn is the momentum of nth particle, right? है ना, mvcm क्या है, मोमेंटम ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, बाकी रिस्पेक्टिव पार्टिकल्स जो है उनका मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स। ठीक है, तो वी कैन रिप्लेस these terms by p, all p's, so pcm is p1 plus p2 to pn। see, for momentum we have no nothing like velocity, है ना। in velocity we had divided by total mass, m से डिवाइड किया था, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। उसमें हमने क्या किया था, m1v1 plus m2v2 to mn_vn अपॉन m1 plus m2 plus mn ऐसे किया था, बट यहाँ पे ये अलग सा कुछ है ना, वैसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, हम इंडिविजुअल मोमेंटा को ऐड कर रहे हैं टू गेट टोटल मोमेंटम। वी आर सिंपली एडिंग momentum of all the particles that we have to get the momentum of center of mass। okay, again for n particle system we write RCM as this, and velocity of the center of mass is written as this, right? This is how we write position vector of center of mass and velocity of center of mass। now we are going to differentiate velocity with respect to time, both left hand side and r hand side are to be differentiated with respect to time to get acceleration। okay, dv by dt is a, ठीक है। और एक्सेलरेट कब करेगा, कोई भी पार्ट सिस्टम एक्सेलरेट कब करेगा, व्हेन देयर इज चेंज इन वेलोसिटी। इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी चेंज कब होती है, जब हम उस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, on the application of external force, right? when we apply external force on the system then velocities change, है ना। तो फॉर सेंटर ऑफ मास वी कैन राइट dvcm by dt, dv by dt होता है, तो सेंटर ऑफ मास के लिए dvcm by dt हो जाएगा। प्लीज राइट दिस। see again we have differentiated, ठीक है, so on differentiating we get this, so you can see that m1 will not differentiate again, the same reason, because m1 is not changing with time, only velocity is changing with time। so dv1 by dt is a1, dv2 by dt is a2, dvn by dt is an, are the acceleration of the respective particles that we have, and for dv1 by dt we'll substitute these a1, a2, an, right? We'll get this, write the relation। so this is the formula for acceleration of center of mass। how do we find force, using second law of motion, Newton's second law of motion, force is ma, mass into acceleration, right? तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, this m1 a1 vector ma is f1, है ना, m2 a2 mass into acceleration f2 हो जाएगा, force is acting on individual particles, we are getting this way, and mn and an is fn, right? and sum of all these forces are acting on individual force particles of the system, and sum of all these forces can be written as this summation over I fi। ठीक है, तो हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखा है, उसमें हमने m1 a1 के प्लेस पे f1 लिख दिया, इजी है, कुछ भी नहीं करना। m2 a2 के प्लेस पे f2 कर दिया, और mn an के प्लेस पे fn कर दिया, राइट, है ना। now move this m to the other side, so macm is equal to summation over I fi, right? ये m जो ये वाला m है ना, look at the cursor movement, this m has to be moved to other side,
तो MACM हो जाएगा, इट इज इक्वल टू समीशन ओवर IFI, टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। ठीक है, hence the product of total mass of the system and acceleration of its center of mass is equal to the vector sum of all the forces acting on the system। आपने टोटल मास लेना है और सेंटर ऑफ मास में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसको उससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आपको नेट फोर्स मिल जाएगा जो आपके सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स पे एक्ट हो रहा है। क्लियर? सी एक होते हैं एक्सटर्नल फोर्स और एक होते हैं इंटरनल फोर्स। दे आर एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एक्सटर्नली वी आर अप्लाइंग फोर्स ऑन दिस, है ना, जिससे वो एक्सेलरेट हो रहा है। बट देर आर इंटरनल फोर्सेज एज वेल। ऑल द पार्टिकल्स विल एक्सर्ट forces on each other, but these forces cancel out in pairs using Newton's third law of motion। जैसे कि M1 है एंड ये M2 है, तो जितना फोर्स M1 M2 पे एक्सर्ट कर रहा है सेम फोर्स M2 M1 पे एक्सर्ट करेगा। तो दोनों फोर्सेस जो है आपके कैंसिल हो जाएंगे एंड दिस इज द रीजन वी कंसीडर ओनली द एक्सटर्नल फोर्सेस नॉट द इंटरनल फोर्सेस। ठीक है, बिकॉज इंटरनल फोर्सेस कैंसिल आउट इन पेयर्स and therefore we consider external forces only, not internal। so we can write F external here। तो थोड़ा सा और हम स्पेसिफिक हो गए हैं और क्लैरिफाई हो गया है, क्लियर हो गया कि फोर्स का मतलब क्या है यहाँ पे। बिकॉज अगर हम फोर्स लिखते हैं सिर्फ तो सामने वाले को क्लैरिटी नहीं होती ना कौन से फोर्सेस एक्सटर्नल और इंटरनल, तो हमें क्लियर हो गया कि नहीं, इंटरनल फोर्सेस तो कैंसिल हो जाएंगे पेयर्स में, वी हैव ओनली एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है, जो इफेक्ट कर रहे हैं, जो उसको एक्सेलरेट करवा रहे हैं, उसके लिए सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस ही रिस्पॉन्सिबल है। So therefore, the center of mass of a system of particles moves as through all the mass of the system is concentrated at the center of mass and all the external forces are applied at center of mass. For example, when a radioactive nucleus initially at rest decays into two fragments, the center of mass of the system remains at rest. If those two blocks are pushed towards each other, there is a spring in between them. They are connected through a spring, and if we push both the blocks towards each other and release, तो थोड़ा सा वाइब्रेशन तो आएगा, नो डाउट दे विल वाइब्रेट, बट सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होगी। ठीक है, पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास रिमेन्स एट द सेम पोजीशन एंड अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी एक्सप्लोड्स ड्यूरिंग इट्स फॉल। जैसे कुछ भी ऊपर से मीटियोर या मीटियोराइट, ठीक है, मीटियोराइट आया और वो हमारे एटमॉस्फेयर में बर्न होकर उसके फ्रेगमेंट्स अगर नीचे गिर रहे हैं, ऐसी कोई सिचुएशन कंसिडर करो, तो वो इनिशियली क्या था, एक बिग मास था, बट बाद में एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन हीट से वो फ्रेगमेंट्स में एक्सप्लोड हो गया। ठीक है, एंड दीज फ्रेगमेंट्स विल फ्लाई ऑफ रैंडमली इन डिफरेंट डायरेक्शंस, है ना। तो उस केस में क्या होगा, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम मूव्स अलोंग द सेम वर्टिकल लाइन अलोंग व्हिच दैट बॉडी वुड हैव ट्रेवल्ड। देखो इनिशियली अगर वो ऐसे आ रहा था, ठीक है, चाहे उसके फ्रेगमेंट्स में वो डिवाइड होके अलग अलग फ्रेगमेंट्स इधर उधर चले गए, बट सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, कहाँ पे होगा, सेम लाइन में। अगर वो नहीं डिवाइड होता, अगर वो डिवाइड नहीं होता तो वो कैसे जाता, स्ट्रेट जाता, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता, बट वो डिवाइड हो गया, है ना। लेकिन अभी भी सेंटर ऑफ मास जो है वो मूव करेगा अलोंग द सेम वर्टिकल लाइन अलोंग विच द बॉडी वुड हैव ट्रेवल्ड। ठीक है, you can get questions based on this is important। तो इस पे कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स एग्जाम में आ जाती हैं। तो जस्ट इसको अब जरूरी नहीं है कि स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखो, यू कैन ड्रॉ अ meteorite एंड उसको फ्रेगमेंट्स दिखा के यू कैन राइट सेंटर ऑफ मास विल मूव अलोंग द सेम वर्टिकल लाइन। ठीक है, now conservation of linear momentum of center of mass। linear momentum is conserved when we have done conservation of linear momentum also, and linear momentum is conserved when there is no external force acting on the system, right? So how do we write linear momentum of center of mass? We write like this: total mass multiplied by velocity of center of mass, and when we differentiate momentum,
we get this. See, momentum is mass into velocity, right? So it's capital M, not small m. Write capital M here because we are writing capital M everywhere. Okay. So capital M dvcm by dt. P is mv ना. P is mv. इसको यहाँ पे पुट करोगे. अब आप मोमेंटम को डिफरेंशिएट कर रहे हो टाइम के रिस्पेक्ट में. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये आपका न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में भी हमने रिलेट किया था ना. रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड. किया था ना, ये वही चीज है. तो एम पी के प्लेस पे वी आर राइटिंग एम वी है ना. अब एम तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा. वी को हम डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, एंड डीवी बाई डी इज ए एंड एम ए सी एम इज एक्सटर्नल फोर्स. ठीक है. So if no external force acts on the system, then F external is 0. अगर सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रहा तो F external क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. dpcm by dt is 0. Differentiation of any quantity is 0 and differentiation of a constant is 0. ये पता है हमें, है ना. किसी भी कांस्टेंट को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो 0 आता है. इसका मतलब क्या हुआ कि लीनियर मोमेंटम इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी. बट हाउ डू वी राइट लीनियर मोमेंटम? वी राइट लीनियर मोमेंटम एज mvcm. इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज अ कांस्टेंट. Mass is already a constant, so velocity has to be constant. Only then product will be constant, right? So therefore, velocity of center of mass is a constant. The velocity of center of mass remains constant if no external force acts on the system, and this is law of conservation of linear momentum. Please write this. Done. Okay. For example, two balls are shown simultaneously in air. The acceleration of the center of mass of those two balls in air is equal to g. When two spheres collide, the forces acting are internal, and so velocities of center of mass does not change. Velocities कब change होती हैं? जब external forces होते हैं. अगर internal forces है तो change नहीं होती है. ठीक है? In one-dimensional collision between two spheres, we write this conservation of linear momentum. Linear momentum is conserved, है ना. हमने elastic and elastic collision किया था ना work energy and power में, उसमें यही किया था. ठीक है. तो अगर हम दोनों साइड टोटल मास से डिवाइड कर देंगे, we will get this. And this is, see, it looks like velocity of center of mass, no? This formula, m1 u1 plus m2 u2 upon m1 plus m2. So we can say that this is the initial velocity of center of mass and this is the final velocity of center of mass. तो ये हमने सेकेंड पॉइंट को प्रूव किया है यहाँ पे. सेकेंड पॉइंट में क्या है कि अगर दो स्फेयर्स कोलाइड करते हैं और फोर्सेस जो उसमें एक्ट हो रहे हैं वो इंटरनल है, एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है, तब उस केस में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी डज नॉट चेंज. ठीक है. वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास डज नॉट चेंज. तो हमने इसको प्रूव कर दिया मैथमेटिकली. ठीक है. दोनों का वन डायमेंशनल कोलिजन में क्या रिलेशन होता है वो लिखा, m1 प्लस m2 से दोनों साइड डिवाइड किया. वी हैव गॉट दिस UCM एंड VCM. U फॉर इनिशियल, V फॉर फाइनल. आपको ध्यान आ रहा है कौन सा था ये जिसमें हम दो बॉल्स ड्रॉ करते थे, m1 m2 u1 u2, फिर उसके बाद कोलाइड करवाते थे m1 v1 m2 v2. ये वो वाला है. ठीक है. The velocity of center of mass of an isolated system remains dash as long as no external force acts on the system. Number one constant, units 0, infinity. Constant is the correct answer. Next question. The acceleration of an isolated system of center of mass is constant, unity, 0, infinity. 0 is the correct answer.